My lovely students, welcome to Mathological. This is the 16th session of CAT 2026 DILR series. In this series, we are doing total 100 DILR sets for CAT 2026 examination, and this is the 16th session in that series. Start karte hain session ko, and if you have not already subscribed, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. And this is the set followed by 5 questions. So pause the video, try to attempt it yourself first, then only watch the solution. Let's study the set first. A venture capital firm is allocating a pool of 8 tech startups S1, S2, S3, S4, and so on till S8 across 3 investment funds Alphabet, Rajabeta, and Hungamma. There are 3 funds Alphabet, let us say, we are denoting this by A, Rajabeta by R, and Hungamma by H. There are 3 investment funds and there are total 8 tech startups in which these investment funds will be investing. To manage risk and maintain balance, the portfolio manager must follow these guidelines. First condition, each of the 3 funds must invest in 4 startups. So every fund will be investing in 4 startups. Each of the 8 startups must receive investment from at least one fund. ठीक है, so सबको at least एक fund से तो investment मिलेगा ही मिलेगा. No startup can receive investment from more than 2 funds. So either they will be getting investment from one fund or from 2 funds. Some startups will be getting investment from one fund and some startups will be getting investment from 2 funds. टोटल तो सारी की सारी 8 को कम से कम एक से तो मिलना ही मिलना है. ठीक है, so let us assume there are A startups which are getting investment from one fund and there are B startups which are getting investment from 2 funds. So A plus B is equal to 8 because every startup is getting investment, and A plus 2B, A plus 2B, because A startups are getting investment from one fund, so A into 1 plus B are getting investment from 2 funds, so 2 into B, A plus 2B, this should be equal to, क्योंकि 4 फंड्स को 4 स्टार्टअप्स को फंड किया है A फंड ने और 4 को फंड किया है R फंड ने और 4 को किया है H ने, तो टोटल 12 हो गया. तो A plus 2B will be equal to 12. These should be our 2 equations, and when we solve these 2 equations, A plus B 8 है, A plus 2B 12 है, तो B will be equal to 4 and A will also be equal to 4. Like exactly 4 startups will be getting investment from one fund and 4 startups will be getting investment from 2 funds. That we know already. ठीक है, अब अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं इसको. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, so what all can be possibilities? ओके, फर्स्ट 3 कंडीशंस तो हो गई. ठीक है, 4 में एक्चुअल में इन्वेस्ट करना है सबको. अल्फाबेट मस्ट इन्वेस्ट इन बोथ S1 and S2. So S1 S2 की बजाय 1 and 2 ही लिख लेते हैं. So अल्फाबेट मस्ट इन्वेस्ट इन 1 as well as in 2. ये तो कंफर्म हो गया. And then no fund is allowed to invest in both S3 and S4. So 3 and 4 cannot be in the same fund. Same fund cannot invest in 3 and 4 both. Rajabeta cannot invest in S7, so cannot invest in 7. If any fund chooses to invest in S5, then it must also invest in S6. So जिसने भी 5 में इन्वेस्ट किया, they must also invest in 6 as well. अच्छा, ये यूनिडायरेक्शनल है, 5 में करना है तो 6 में भी करना है, वाइस वर्सा नहीं है. हो सकता है 6 में अकेले किसी ने इन्वेस्ट किया हो, बट अगर 5 में किया तो डेफिनेटली 6 में जरूर किया होगा. अल्फाबेट कैन नॉट इन्वेस्ट इन S8, so कैन नॉट इन्वेस्ट इन S8. S5 receives fund from 2 startups. Okay, so out of those 4 startups which are receiving fund from 2 investment funds, S5 is one of them. And if S5 has received funds from 2 startups, then that implies that S6 must also have received funds from 2 startups, because जिसने भी S5 में इन्वेस्ट किया है उसको S6 में करना ही पड़ेगा. So यानी कि S5 as well as S6 both have received funds from 2 startups. Next, 2 startups are receiving funds from both Alphabet and Hungamma. One startup is receiving funds from both Hungamma and Rajabeta. Okay, that is fine. तो मैक्सिमम 2 ही स्टार्टअप से दो ही फंड से इन्वेस्टमेंट मिल सकता है. ठीक है, सो देयर आर अल्फाबेट एंड राजाबेटा, सो देयर आर 2 कॉमन्स बिटवीन अल्फाबेट एंड राजाबेटा, एंड बिटवीन हंगामा एंड राजाबेटा देयर इज एक्जैक्टली वन स्टार्टअप दैट इज कॉमन. अब टोटल 4 ऐसे स्टार्टअप्स हैं, B was equal to 4 startups which received funds from 2 investment funds, and there are 4 startups which received funds from exactly one. Definitely 5 is one of those 4 which are receiving fund from 2 investment funds.
and similarly 6 is also there. So 5 and 6 are receiving funds from two investment funds. Okay, और हमें पता है कि दो ही स्टार्टअप ऐसे हैं which are receiving funds from Alphabet and Rajabeta. One has received funds from both Hungamma and Rajabeta. So there will be exactly one startup which will be receiving funds from Alphabet and Hungamma. Cause total 4 को ही तो रिपीट किया है, 4 को ही दो जगह से फंड मिले हैं. 4 startups are getting funds from 2 funds. So 2 are common in Alphabet and Rajabeta. 1 is common in Hungamma and Rajabeta. So 1 will be common in Alphabet and Hungamma. Okay. Is that clear? And if there are 2 startups which are common in Alphabet and Rajabeta only, and 5 and 6 both are receiving investments from 2 funds, then these 2 statements imply that 5 and 6 both must be common in Alphabet and Rajabeta. Pause the video and think about it. कि 5 and 6 दोनों में ही कॉमन होंगे अल्फाबेट और राजाबेटा में, बिकॉज और कहीं पे भी दो फंड्स कॉमन नहीं है, दो स्टार्टअप्स कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट और राजाबेटा ही दो स्टार्टअप कॉमन है. अदरवाइज अल्फाबेट हंगामा में वन स्टार्टअप इज कॉमन, राजाबेटा हंगामा में ओनली वन स्टार्टअप इज कॉमन. So definitely 5 and 6 both must be receiving investments from Alphabet and also from Rajabeta. अच्छा, अल्फाबेट के चारों के चारों हमें मिल गए, सो लॉक्ड हो गया. तो फिक्स्ड फॉर अल्फाबेट. Alphabet is basically investing funds in S1, S2, S5 and S6, and Rajabeta is surely investing in S5 and S6. अच्छा, सारे के सारे स्टार्टअप्स को कम से कम एक इन्वेस्टमेंट फंड से तो मिलना है. सबको एक बार नोट डाउन कर लेता. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, now 5 is receiving fund from 2 funds, 6 is also receiving fund from 2 funds. 3 and 4 cannot be funded by the same investment fund. और हमारा अल्फाबेट का ग्रेड तो लॉक हो गया है, तो अल्फाबेट को कोई भी एडिशनल स्टार्टअप तो नहीं मिल सकता. किसी और एडिशनल स्टार्टअप पे तो अल्फाबेट फंड नहीं कर सकता है. 3 और 4 में से अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगा कि इधर 3 विल बी फंडेड बाय राजाबेटा एंड 4 बाय हंगामा और वाइस वर्सा. ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? और 7 कैन नॉट बी फंडेड बाय स्टार्टअप. S7 कैन नॉट बी फंडेड बाय राजाबेटा, सो डेफिनेटली दैट मस्ट बी फंडेड बाय हंगामा, बिकॉज अल्फाबेट के तो डेडलॉक हो गया. तो 7 का भी कंपलसरी हो गया कि हंगामा से केस होगा. ठीक है, तो इतना पार्ट तो हमारा कंपलसरी हो गया, यानी कि फिक्स्ड हो गया कि 1 2 5 6 आर गेटिंग फंड्स. S1 S2 S5 S6 आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम अल्फाबेट. S5 and S6 are getting funds from Rajabeta and S7 is getting funds from Hungama. अब हंगामा में पास 3 स्लॉट्स अवेलेबल है और राजाबेटा के पास 2 स्लॉट्स अवेलेबल है. नाउ 3 and 4 में से 3, if S3 is with Rajabeta, then in that case S4 will be with Hungama or vice versa. If S4 is with Rajabeta, then S3 will be with Hungama. तो ये दो पॉसिबल केसेस होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अब क्या क्या बच गया हमारे पास? तो 3 और 4 को तो एक ही एक से फंड मिलेगा. 7 का भी फिक्स हो गया. 7 को भी फंड से फेक से ही मिल सकता है, अल्फाबेट से मिल नहीं सकता, राजाबेटा से मिलना नहीं है. तो 7 का भी एक ही केस पॉसिबल है. So out of 1 2 and 8 there will be exactly 2 firms, 2 startups which will be getting funds from 2 investment funds. अब वो कौन से केसेस हो सकते हैं? या तो 8 and 1 हो सकता है, 8 and 2 हो सकता है, या 1 and 2 हो सकता है. 3 possible cases. तो either 8 and 1 will be receiving funds from 2 investment funds, or 8 and 2 or 1 and 2. But एक बार और सोचो कि 1 and 2 both are getting funds from Alphabet. So if there is a firm which is giving funds to 1 and 2 both, then again फिर वहां से भी हमारे अल्फाबेट के साथ में उसका भी 2 कॉमन आ जाएगा. सो 1 and 2 दोनों को 2 फंड से इन्वेस्टमेंट मिले. दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल विद द गिवन कंडीशंस. तो 1 and 2 वाला केस नहीं हो सकता. So definitely either 8 and 1 will be getting investment from 2 funds, or S8 and S2 will be getting investment from 2 funds. Clear है बात? तो 8 तो पक्का है हमारा कि S8 is definitely getting investment from 2 funds. Those 2 funds are obviously R and H. तो R and H में 8 भी कंफर्म हो गया. S8 is common in both. So either S1 और S2. अब स्लॉट्स हमारे फिल्ड हो गए फॉर राजा बेटा 5 6 and 8 and 3 और 4 में से कोई एक. सो 1 और 2 में से कोई एक रहेगा विद हंगामा. This is our final composition 1 2 5 6 with Alphabet, with Rajabeta 5 6 and 8 and 1 of 3 and 4, and with Hungama 7 8 and then 1 of 3 and 4 and 1 of 1 and 2. टोटल केसेस कितने बनेंगे? क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं अपने. टोटल केसेस कितने बनेंगे यहाँ पे? अब देखो एक केस हमारा पॉसिबल हो सकता है कि इधर राजा बेटा इज गेटिंग गिविंग फंड्स टू 3 एंड देन इन दैट केस हंगामा विल बी गिविंग फंड्स टू 4, या फिर वाइस वर्सा. तो 2 केसेस पॉसिबल होंगे 3 और 4 से. ठीक है, अगर 3 मिल गया राजा बेटा को तो 4 मिलेगा हंगामा को, और वाइस वर्सा. तो 2 केसेस आर पॉसिबल इन दिस केस. सिमिलरली 1 and 2 में से कोई एक मिलेगा हंगामा को, सो 2 केसेस आर पॉसिबल विद दिस.
ओके, और सारे के सारे फंड्स को एक-एक तो मिल ही रहा है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। टोटल केसेस कितने पॉसिबल हुए हमारे? इस केस में टोटल केसेस आ गए 2 इंटू 4 केसेस आर पॉसिबल। Okay. Questions. First question. How many of the 8 startups are necessarily funded by 2 investment funds in every valid allocation? Total allocation हमारे पास है 4. And which are the startups? How many startups are there which are necessarily funded by 2 investment funds in every possible allocation? So 5 and 6 are definitely getting funds from 2 investment funds. S5 and S6 are for sure, irrespective of which allocation we are talking about. Similarly for S8, so there are 3 startups which are getting funds from 2 investment funds. So 3 will be the answer. बाकी चौथा हमारा होगा S1 और S2. There are 3 which are for sure getting investments from 2 investment funds. So 3 particular S5, S6 and S8. और fourth जो होगा हमारा वो that can be S1 or S2. Second question, how many distinct allocations of startups to the 3 investment funds are possible under the given conditions? There are total 4 distinct allocations possible. Third question, which of the following pair of startups cannot be invested by the same fund under any circumstances? S1 and S5 both are receiving funds from A, so this is not the answer. S2 and S6 again, S2 and S6 are also receiving funds from A, so this cannot be the answer. S1 and S8, so S1 and S8 can receive funds from Hungamma, so that is possible, so this cannot be the answer. And S5 and S7, they cannot be receiving funds from one startup because S5 is either with Alphabet and Rajabeta, but S7 cannot be with Rajabeta. S7 is also not with Alphabet, so definitely S5 and S7 should be the answer. That in any condition, these cannot be receiving funds from the same investment fund. Fourth question, if Rajabeta chooses to invest in S3, which fund must invest in S4? So if Rajabeta is investing in S3, in that case, Hungamma will be investing in S4 for sure. Last question, if Hungamma invests in S2, which of the following must be true? So if Hungamma is investing in S2, in that case, Rajabeta invests in S3, not necessary. ठीक है, सो पॉसिबल भी है, नहीं भी हो सकता है. मस्ट बी ट्रू पूछा है, पॉसिबल तो पॉसिबली ट्रू हो सकता है 50% केसेस में, बट नॉट डेफिनेटली करेक्ट. सिमिलरली राजा बेटा इन्वेस्ट इन S4, नॉट डेफिनेटली करेक्ट. हंगामा इन्वेस्ट इन S3, नॉट नेसेसरली करेक्ट. राजा बेटा इन्वेस्ट इन S8, यस दैट इज करेक्ट बिकॉज S8 में तो राजा बेटा हंगामा दोनों को इन्वेस्ट करना है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. दिस वाज आवर सेट फॉर टुडेज सेशन. आई बिलीव कि जो ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे क्वेश्चन समझ में होंगे. फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. सेशन अगर पसंद आए उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.